Okay, guys, keep silence. Everybody settle down. So finally, we are here with inheritance. So we all are from community of coders. He is the general secretary, and this is the code here. Okay, so we will be giving you a glimpse of last year's inheritance. We all had been the mentees and our seniors were our mentors in the last year's inheritance. So it was very nice event. So let's have a glimpse. ऑन कर So you all saw the glimpse, and I feel that you are all excited for the inheritance 2022. So basically, I am going to discuss what are the basic steps and what is the time process of inheritance. So, क्या है inheritance? So first is creating a group project. So basically, we mentioned that you need to form groups of 4 and choose a domain and a project idea.
So आप लोगों को टीम्स बनाना है and you have to select a domain and आपस में डिस्कस करके you have to allot a task and you will be assigned a mentor. So mentors play a very crucial role. They will be interacting with you during the whole timeline and they will guide you to your project's end. And ऐसा नहीं सोचना कि like we are asking silly doubts, like they are your seniors and they are very happy to help you in any case. And last is the main and the most important part, that is you have to develop the project, and that's going to be very important because it will be a very important project for your resume and for the future prospects. Thank you. I would like to hand over to Saurabh. Right, good evening everyone. And ये सब तो बातें कर ली कि इनहेरिटेंस क्या है, कैसे होगा, बट तुम्हें क्या करना है उसमें as second year students. So firstly, next week में, like from now till the next week deadline रहेगा, you will be given one form. उस form में whatever team of 4 you have made and whatever ideas you have come up with, जो हम लोग ने गणपति वेकेशंस में बोले थे कि ये तुम्हारा होमवर्क है करके आओ, उस फॉर्म में तुम्हारे सब टीम मेंबर के डिटेल्स एग्जैक्टली 4 की टीम होनी चाहिए एंड तुम्हारे जो टॉप 3 आइडियाज है कौन से भी डोमेन्स की होने दो उसमें फिल कर दो. आफ्टर दैट वी वुड कम्युनिकेट बैक टू यू, सो दैट वुड बी द आइडिएशन स्टेज. मेंटर्स तुम्हारे सबके आइडियाज लिखेंगे एंड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज इन देयर डोमेन दे विल कनेक्ट विद यू, ब्रेनस्टॉर्म विद यू, आइडिएट विद यू. सबसे क्रूशियल फेज है ये वाला. एंड the next phase, innovate. बहुत फन होने वाला है ये, सीखने भी बहुत मिलेगा, मजे भी करने बहुत मिलेंगे. Trust me, this will be the best 3 months of your college life. हम लोग रात 2-2 बजे तक मीट में बैठ के प्रोजेक्ट्स बना देते हैं. जो 4 लोग मेरे टीम मेंबर्स से बहुत अच्छे दोस्त बने हैं. And this is the point where you network with each other and you learn how to make team projects. आगे कभी competitions में जाओ, hackathons में जाओ, काफी ज्यादा काम आएगा. And development knowledge तो obviously important है ही. And to give you a glimpse of how important your inheritance project is, हम सबकी यहाँ जो लोग खड़े हैं, including the final years, हम सबकी development की journey kickstart की थी inheritance ने. आज जो भी हम लोग hackathons and competitions जीते हैं, that is all due to inheritance. So काफी important है ये. And whatever doubts you have, directly contact the mentors. वो भी तुम रात बजे 2 बजे तुम लोगों को meet में बुलाना है, बुला लो, सब doubts clear कर लेंगे. And this time it's offline, so that's another huge advantage. If you want to have weekly meetings with your mentors, definitely go ahead and have it. And the last is capitulate, a very underappreciated aspect of inheritance. Speaking about hackathons, सबसे important aspect hackathons का ये नहीं रहता कि how well you develop your product, आपके development skills कितने अच्छे हैं. The most important part is आपको product बेचने आता है कि नहीं. This is a very underappreciated skill. Capitulate, pitch करने आना चाहिए तुम्हारा project, and that would be the final part of inheritance. 2 दिन तक continuously 6 hours, सब लोग के projects को 15 to 20 minutes pitching करने दिया जाएगा. आपके सामने रहेंगे आपके seniors, final years and COC के veterans जो भी पहले के members थे, and वो सब लोग आज काफी established है industry and academia में. So that would be a very important opportunity for you as well. And timeline की बात करते हैं. 16 से 23rd. So अब आप घर पे जाओगे और ब्रदर जब भी मीट एंड होगा उसके बाद से लेके नेक्स्ट वीक तक अ फॉर्म विल बी रिलीज. जहाँ मैंने जैसे कहा 4 लोगों की टीम, सबके डिटेल्स उसमें पूछेंगे एंड योर टॉप 3 आइडियाज यू हैव टू सबमिट इट. आराम से 1 वीक ले लो, आइडिएट कर लो उस पर. तुम लोग को जो भी मीट्स लेना है तुम लोग के टीम मेंबर्स के साथ कर लो. जो भी डोमेन्स तुम लोग को चाहिए, नीड नॉट बी ऑफ द सेम डोमेन. तीनों जो भी प्रोजेक्ट्स अलग अलग डोमेन पे डाल दो, बट बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी. After that, 25th September, which is the next weekend, we are planning to have a Git workshop. Online या offline वो तुम लोगों को बताया जाएगा. But जो Git workshop है वो one of the most important workshops in the entire inheritance वाला program. If you do not know how to use Git and GitHub, which is a version control system, नहीं होगा तुम लोग से. तुम लोग को project अगर बनाने भी आता हो, but you do not know how to store that project, impossible है. नेक्स्ट थिंग है, आपने जो सबमिशन किया उसके नेक्स्ट वीक में इंटरव्यूज होंगे आपके. इंटरव्यूज इन द सेंस इट वुड जस्ट बी अ कैजुअल टॉक, देयर वुडंट बी एनी एलिमिनेशंस और एनी काइंड ऑफ अ थिंग. बट तुमने जो भी टॉप 3 आइडियाज दिए हैं, द मेंटर्स व्हिच आर एक्सपर्ट्स इन दैट डोमेन, दे वुड बी कनेक्टेड टू यू. मीट्स लेंगे, तुम्हें बोलेंगे फीजिबिलिटी तुम्हारे टॉप 3 आइडियाज की
क्या है आइडियाज कैसे होंगे, क्या वो 3 महीने में टेक स्टैक तुम लोग को रेकमेंड करेंगे, या फिर अगर तुम लोगों को कोई टेक स्टैक बाकी है यू कैन आस्क अस टू आस्क की इज दिस फीजिबल और नॉट। वो तुम लोग का 2 अक्टूबर तक होगा। देन सेकंड के बाद के वीक में हमारा एमएसटी है, सो दैट इज वी हैव प्रोवाइडेड एनी एक्टिविटी इन दैट वीक। एंड 3 अक्टूबर से द नेक्स्ट 3 मंथ्स तुम्हारा कोडिंग फेज चालू होता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन 9 जनवरी को आपका नेक्स्ट सेमेस्टर चालू होगा। You'll be given 1 week of your next semester to polish your projects and submit them on GitHub. And last जो रहेगा 21st से 22nd January project के presentations रहेंगे, as I said that capital 8 part pitching करना। And 2 other workshops which we have planned। Second week of October में एक ML Basics का workshop है जिसमें Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn ऐसे सब चीजें सिखाई जाएगी which are very important for the ML Basics। And first week of November, which is after your MSDs, an app development workshop will be conducted. Based on जो भी project के responses आ रहे हैं, we would decide कि वो कौन से language में या कौन से framework में रखना है। And in सबसे the most important thing is कि keep your hype up, keep your enthusiasm up, keep your confidence up. These 3 months will be a very crucial learning experience. बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने भी मिलेगा, and आगे जाके help भी करने वाला है। As Naman had suggested, resume में सबसे टॉप पे ये डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट जाने वाला है। मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो इंटर्नशिप का इंटरव्यू था, सबसे पहले उसने जब मेरा रेज्यूमे देखा, he asked me my inheritance project क्या किया उस पे, कैसे किया, almost 15 minutes तक। So you can understand कितना इम्पोर्टेंस है। और जो भी लोग इधर डेवलपमेंट में है, we have some GSOCers right here, अगर आपको GSOC वगैरह पता है, they also kickstarted their development journey from inheritance. So just so I put a perspective of how important this event is. So yeah, ये एक weekend. Second thing which I wanted to talk, तुम्हारा जो first 1 month रहेगा, टीम में सब लोग like let's say your domain is web plus ML, app plus ML या कुछ भी होगा, I would recommend कि पहला महीना सब लोग सब domains explore करो। That is the reason पहले महीने में we are keeping a ML V6 workshop, web dev workshop already हो चुका है, हम लोगों ने 3-1 महीना पहले लिया था। अगर if you have not attended it, उसके recordings and उसके slides and सभी resources, codes etc. will be sent to you again. वो करना if your project is in web। ML के basics है तो सभी team members ये ML basics करना first 1 month में। App dev का workshop है तो अगर project है तो app dev के भी basics करना। And after 1 month decide which domain you want to explore. It is very crucial to explore each and every domain initially। थोड़ा feet तुम्हारा water में जाना चाहिए, उसके बाद you need to see which tsunami you want to dive in. Okay, so that's all this part of it, and enjoy this completely. Next, we'll now introduce the domains which we would like to do mentor in. तुम लोगों को जो भी इन domains में से project select करना है, most welcome. So now I'll introduce her to, and yeah, timeline के regarding कुछ भी doubts है तो end में भी पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, and नोट करके रखो एटलीस्ट एंड में पूछ सकते हो सो दैट मीट के भी जो डाउट्स आएंगे वो पूछ सकते हो। ऑलराइट, आई वुड नाउ वेलकम हर्ष फॉर वेब डेव का इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग गाइस। तो जैसे कि सर्वज्ञ ने बताया कि जैसा कि सर्वज्ञ ने बताया कि ऑलरेडी वेब का इंट्रोडक्शन हो चुका है और हम लोग ने वर्कशॉप भी लिया था 3 महीने या 2 महीने पहले, पर फिर भी आज थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं हम लोग कि वेब डेवलपमेंट क्या है। सो बेसिकली जो भी हम लोग वेबसाइट्स हम लोग सर्व करते हैं इंटरनेट पे और कहीं पे भी, तो ब्राउजर पे भी, तो वो सब वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। मतलब उसमें हम लोग जनरली वेब डेवलपमेंट जो भी होता है उसको हमेशा हम लोग 2 पार्ट में डिवाइडेड रखते हैं, लाइक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो फ्रंट एंड वो होता है जो हम लोग देख सकते हैं, जो हमारे स्क्रीन पे हमेशा ब्राउजर पे दिखता है। तो बेसिकली हम लोग कभी भी फ्रंट एंड पे बहुत अट्रैक्टिव होता है, जनरली लोग वेबसाइट्स काफी अट्रैक्टिव रखते हैं ताकि लोग आए, सर्व करें, ट्रैफिक बढ़े, बट कभी भी हम लोग को इंटरनली वो वेबसाइट वर्क कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, वो मालूम नहीं पड़ता। तो वो आता है बैकएंड के अंदर। तो बेसिकली वो उधर भी देखो कि अगर तुम्हारा फ्रंट एंड है पर तुमको अंदर मालूम ही नहीं है कि बैक एंड में क्या है, वो बाहर से कितना अच्छा लग रहा है बट पीछे कुछ है ही नहीं,
तो बेसिकली वो जो पीछे का पार्ट है वही है बैक एंड। सो ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है कि फ्रंट एंड में भी HTML होगा और विदाउट CSS वो कैसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं। अगर उसको CSS दिया तो वो अच्छा दिख रहा है बट वो वर्किंग नहीं है, तो उसको थोड़ा जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे तो वर्क करेगा। तो बेसिकली वेबसाइट का ये पूरा एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग। फिर बैकएंड वही हम लोग सिर्फ वेबसाइट को आगे से देख के बता नहीं सकते कि वेबसाइट पे क्या चल रहा है। अगर तुम देखो इधर तो वो अलग लग रहा है, अगर तुम पहला पिक्चर देखोगे तो अलग दिख रहा है, बट उसको अगर पीछे से देखोगे ध्यान से तो समझेगा कि इसका कंडीशन क्या है। तो बेसिकली बैकएंड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और सारे मेजर जो कोड होते हैं और सारा लॉजिक जो होता है डेटाबेस से जो कनेक्शन होता है फेच करना, वो सारा चीज जो रहता है वो बैकएंड दिखता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ध्रुमिल आया। ओके, सो अभी हम लोग ने बात किया जैसे फ्रंट एंड बैक एंड, तो वैसे दोनों वर्क करना चाहिए। तो बेसिकली आपस में वो इंटरैक्ट करते हैं सो दैट हम लोग का वेबसाइट पूरा फंक्शनल हो और बहुत अच्छा भी दिखे। सो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे गूगल है, सब गूगल यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को जैसे मुझे विकिपीडिया का कोई पेज सर्च करना है तो मैं गूगल पे जाके टाइप करूंगा, तो क्या होगा बेसिकली मेरा जो भी है मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर पे जाएगा, तो गूगल के सर्वर पे फिर उससे डेटाबेस कनेक्टेड होता है। तो वो जो भी डेटा डेटाबेस में कनेक्टेड है उसके रिलेटेड, तो वो डेटाबेस सर्वर को डेटा देगा और सर्वर फिर से हम लोग का रिप्लाई देगा। तो वो रिप्लाई में क्या होता है, तो वो फ्रंट एंड होता है। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बंडल देता है वो, जो हम लोग को ऐसे पेज पे दिखता है। तो ये ऐसे पूरा इंटरेक्शन चलता है। तो बेसिकली जब वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो दोनों चीज सीखना पड़ता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो आगे तुम लोग एक्सप्लोर करोगे तो ये बेसिक आइडिया है कि कैसे इंटरेक्शन वर्क करता है। अभी नेक्स्ट अनन्या को मैं बुलाऊंगा ऐप डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, ओके, नो। Okay, so I had an important announcement to make. Everybody, please follow COC VJTI on Instagram for future updates of all the events. Thank you. Okay, so mobile application development. You guys must be thinking कि हम लोग ने COC का वेब डेव वर्कशॉप अटेंड किया है एंड बेसिक्स हम लोग को पता है। So why should we learn this? ये क्यों करना है? अभी हम लोग को वेब डेव आता है तो why should we go for ऐप डेव, है ना? So first of all हम देखते हैं कि ऐप डेव होता क्या है। So टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं, then mobile application development is a process to make softwares for smartphones and digital assistants, most commonly used for Android and iOS. So simple भाषा में बोलूं तो तुम लोग एक ऐप बनाओगे। अब तुम लोग ने बहुत ऐप्स यूज भी किए, सो इमेजिन करो तुम लोग खुद का एक ऐप बनाओगे, तुम लोग के यूज केस को इम्प्लीमेंट करोगे। सो हाउ एक्साइटिंग दैट वुड बी, राइट? तुम अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे कि ये ऐप मैंने बनाया है, ये ऐसे वर्क करता है, राइट? ओके, सो ऐप डेव एंड वेब डेव में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बोथ हैव देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स। इफ यू सी वेबसाइट is usually accessed through links, and जो app होते हैं that needs to be pre-installed on your mobile phones. Also websites require a internet connection and apps are available offline. देखो तुम लोग अगर देखोगे तो Spotify प्रीमियम हो गया, YouTube हो गया और Netflix है, बहुत सारे ऐसे apps हैं जो तुम लोग ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो, राइट? Okay, so apart from that, we have बहुत सारे features apps में. So क्या होगा? एक होगा तुम्हारा कैमरा, second is location, and apps में तुम sensors use कर सकते हो. Also you have gyroscope. बहुत सारे features है जो तुम अपने use cases को apps के through implement कर सकते हो. अब तुम लोग ने देख लिया कि app and web में क्या difference है, but ऐप डेव स्टार्ट कैसे करें?
So for this, we have some languages. Most commonly used languages are Java, Kotlin, and Dart and Flutter. Apart from that, we also have Swift, React Native, and Python. Okay, so we'll briefly explain you these first three languages, starting with Java. Over to Tushar. So hello. So आपको अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन जावा करना है, तो बेसिकली जावा, अगर आप जावा सिलेक्ट करते हो रेदर देन अदर लैंग्वेजेस एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, then go with the Java. If Java is an object oriented programming language, जो कि पहले 10 साल से यूज हो रही है फॉर मेकिंग बेटर परफॉर्मेंस ऐप, एंड जावा यूजुअली उसका डॉक्यूमेंटेशन इज बेटर देन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज फार एज फ्लटर हो या कॉटलिन हो. देन जावा का जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सबसे बेस्ट है और ऑप्टिमम है. देन अगर आप जावा यूज करते हो, सो बेसिकली आपको जावा के साथ डिफरेंट एंड्रॉयड लाइक आईडीज लगेंगे. लाइक वन ऑफ देम इज एंड्रॉयड स्टूडियो. और फॉर एक्सएमएल फाइल बेसिकली क्या होता है कि वो यूआई के लिए यूज होता है इन मेकिंग जावा एप्स. एक मिनट दिखाता हूँ. एंड द पॉपुलर एप्स विच आर मेड यूजिंग जावा आर स्पॉटिफाई, ट्विटर एंड माइनक्राफ्ट. माइनक्राफ्ट तो खेला ही होगा सबने. तो लाइक एक्सएमएल फाइल, ये एक्सएमएल फाइल का स्ट्रक्चर है. सो यहाँ पे देखो एक अलग अलग कंपोनेंट्स है. यू कैन ऐड दोस कंपोनेंट. सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है. एंड लाइक दिस आर सम प्रोज एंड कॉन्स व्हाई यू शुड यूज जावा. लाइक और कॉन्स भी है जावा के. जावा बेसिकली सिंपल टू लर्नर. अगर आपको C++ आता है देन इट्स वेरी इजी टू लर्न जावा. और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. इसकी मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस. And the runtime security is best, and the performance, obviously performance compared to other Android programming languages it's better. Cons की बात की जाए तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है लाइक उसका सब जावा आप यूज कर सकते हैं, बट ओनली द प्रॉब्लम इज दैट कि यू कांट मेक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स. ओनली इट विल वर्क इन एंड्रॉइड. अगर आपको iOS के लिए कोई iOS के लिए भी ऐप बनाने हैं और जावा के लिए अपने एंड्रॉइड के लिए भी ऐप बनाए, देन यू शुड गो विद फ्लटर. रिएक्ट नेटिव भी है. और देन देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स अबाउट लाइक अमाउंट ऑफ टाइम यू यूज टू नीड. देन फिर मनी भी लगेगा लाइक फॉर डेवलपिंग नेटिव एप्स. सो ये बेसिक टिक टैक टो ऐप है विच वाज मेड बाय मी लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं जावा टेस्ट किया था तब. सब बेसिक आप इससे भी बेटर बना सकते हो लाइक यूआई वाइज. तो जावा में और कुछ बहुत सारे चीजें यू कैन एक्सप्लोर इट. नेक्स्ट तुषार. थैंक यू. नाउ अभी हम देखते हैं अगर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कॉटलिन में करना है तो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिक्वायरमेंट होगी कॉटलिन लैंग्वेज, एंड्रॉइड स्टूडियो एंड एक्सएमएल फॉर यूआई. एक्सएमएल भी सेम ही है जैसे जावा में होता है फॉर यूआई डिजाइनिंग. और कॉटलिन जो है जावा की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट हैज मल्टीपल फंक्शनल फीचर्स देन जावा. देन we have multiple popular apps made in Kotlin. First of all, Slack, Pinterest, Netflix, which are the popular apps. This is the basic Kotlin app. Why we choose Kotlin? There are pros and cons. It has easy syntax. It is a modern language. It's easy to debug. And first of all, it has strong community support in Kotlin. And Kotlin is Java frameworks and libraries compatibility. And also there are cons, as it's a new, so that's why it has limited resources and it's much slower than Java. And it is really new and evolving. Now hand over to Soumitra. Okay, so now talking about app development in Flutter.
So Flutter एक बहुत ही famous framework है, and most of the app developers nowadays use Flutter for their applications. So what is Flutter? Flutter is basically a cross-platform framework. So by cross-platform, I mean that by using the Flutter code, we can make Android as well as iOS apps with a single code base. Apart from that, आप Flutter के use से Android web और desktop apps भी बना सकते हो. So it is quite versatile in developing applications. And some of the famous apps that are made using Flutter are eBay, Google Stadia, Dream11. Okay, so now let's talk about the features in Flutter. So personally, Flutter से आप बहुत ही interactive UI बना सकते हो, and managing the code is very easy in Flutter. So Flutter basically works on widgets, and it also has various rich libraries that we can import, and with the help of these libraries we can add multiple functionalities to the app. The development in Flutter is very fast, so there are features like hot reload, hot restart, which help in compilation and debugging of the code. It is also a very high performance application. So as you can see over here, these are some of this is one of the apps that is developed in Flutter, and आप देख सकते हो कि कितना interactive app है ये. Of course, this is not a very basic thing, but with practice and stuff, we can also develop an app like this. Yeah, patience also. Yeah. So now जो मुझे ऐसा लगता है Flutter का कि it is quite a new framework, but apart from that, it has a very good documentation. So अगर आप कोई नई language सीखते हो, तो you are tend to come across various errors. So Flutter has a very good documentation, and you can also refer it to solve your various errors and stuff. And we hope that you choose Flutter for app development because it has various pros. Like we can also get internships in the second year itself. We have also had various internships. Like me personally, I have taken part in two internships for Flutter development. So yeah. Now I will hand over the presentation to the MIT. Sorry. So talking about the other development domains, we have the Swift and React Native. So Swift is basically for native iOS development. With the help of it, you can create apps that are native specific to the iOS development. And the React Native is it combines the best pieces of native development in React.js. And it is quite similar to the Flutter framework, because it also has the UI component theme in it, which is also in Flutter. So yeah, that is the basic introduction about app development. So next, coming up to the next domain that we're going to know about, that's ML. ML का full form पता है यहाँ पे? गलत, mango learning. So basically, let me give you an example here of a vendor. समझ लो तुम्हारा सब्जी वाला जो है, जो फ्रूट वाला है, तुम उसके बाद जब भी कोई फ्रूट लेने जाते हो, उसे मैंगो, और तुम्हें पता है कि जो भी तुम्हारा राइट मैंगो है वो हमेशा स्वीट रहेगा, और जो तुम्हारा पेल मैंगो है वो हमेशा सार रहेगा, खट्टा रहेगा. तो ये तुमने जो जस्टिफिकेशन बनाया है, ये तुमने जो निकाला है कि ऐसा रहेगा मैंगो, तो ये तुमने एक वेंडर के थ्रू निकाला है. लेकिन कल को समझ लो तुम्हारा वेंडर चेंज हो गया, तुम्हारा एक दूसरा वेंडर आया है जहां पर तुम्हें पता है कि जो सॉफ्ट मैंगोज होते हैं वो जूसी होते हैं, और जो हार्ड मैंगोज होते हैं वो ड्राई होते हैं. तो अब तुम अलग अलग सिनेरियोज के लिए, समझ लो तुम्हें अब इसके लिए कोड लिखना है, तो अब तुम अलग अलग सिनेरियोज के लिए अलग अलग if statements तो नहीं लिखोगे बैठ के, है ना? You can't explicitly code everything here, right? So this is where machine learning comes in. All right.
So handing over the mic to Devansh. Okay, so I guess we have ourselves a problem now. So problem ये है अभी तक जितना हमको समझना है कि like you cannot have मतलब तो एक experience के basis पे you cannot classify everything. Like you know एक कुत्ते का नाम टॉमी है इसका मतलब ये नहीं है सब कुत्तों का नाम टॉमी होगा. And you know there can be humans as well who are named Tommy, so human अपना नाम एंटर करेगा तुम उसको डॉग बोल दोगे तो फिर मतलब देख लो भाई तुमको करना है कर लो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो yeah, so that is the problem. We need to be more sensitive, we need to be smarter about this. We cannot just hard code everything, right? या मतलब हार्ड वर्कर है यहाँ पे कोई तो हार्ड कोड भी कर लो, no problem. But so the way we approach this problem is using machine learning or artificial intelligence. So basically, I'll give you like a quick overview of what artificial intelligence is. So artificial intelligence is an attempt to make machines at least emulate humans. So AI के under there is a specific subdomain called machine learning. There are other and machine learning के under there are obviously like reinforcement learning, deep learning, whatever. So also there are like I guess two types of basic machine learning problems. That is one of regression and one of classification. So अभी जो टॉमी कुत्ते वाला example था, that was a classification problem that you are given a name and you are given some other feature, like maybe you have a photo. So you should be able to tell what it exactly is. That suppose I gave you like two pictures, one is the human Tommy, one is the dog Tommy. So like dog का picture लेके dog बोलो and human का picture लेके human बोलो. Yeah? Like, wow. Okay. Never mind. Yeah. I was on the brink of asking him उसका नाम Tommy है. Yeah, okay. So that is classification. Then there is regression. Regression is basically like तुम्हारे पास past data है. मतलब let's say you have house prices for the past 10 years, let's say. And तुमको बोलना है कि भाई and for any next amount of time you want to say कि मतलब भाई अगले what will be the trend. Regression is used to predict trends in prices or any sort of data. So more trend based things come under regression and classification based things are, you know, yeah. So I will, okay, I'm forgetting something. No, okay, that's fine. Yeah, so I will now pass the mic on to Amen. Hello everyone. So before starting explaining this, let me ask you one question. Okay, that's fine. One question. Which is the greatest and the most efficient machine on this planet? Anyone? Okay, ये देख के. That's fine. That's right. ताली बजाओ अपने आप के लिए एक बार. What you're seeing here is basically what called as a neural network. Okay, what the idea of neural network is mimicking the human brain. So let's consider an example. Things are going to be a little bit technical here. Please pay attention. Let's say you're trying to solve a set of linear equations. Okay, what are linear equations? Like 2x plus 5y is equal to 10, 3x plus 4y is equal to 5, anything like that. You understood? Everyone with me? Okay. So what is the first step you do when you're calculating that? You try to equate the coefficients of any one variable, right? So that is the first step. Then you try to minus subtract it, then one variable gets cancelled. So these are the steps that we follow, right? So now these are small numbers, right? 2 and 5 and 4 and 6, these are small numbers. Suppose you have big numbers and you don't want to calculate with your hand, so you want a machine to do it, right? In that process, what you do is, instead of hard coding all that, just like Arnav said or Devan said, you try a machine to learn it. So what happens in neural network is, these are the three circles that you are saying, these are called neurons or nodes, or whichever you like. And each line of neurons is called as a layer. One
one vertical line is called a layer. So layer by layer, what you do is you try to perform layer by layer one calculation each. Let's say first layer will do the multiplication, the equating the coefficients part. The next part will do subtraction, and the final part will do getting the values. That way, okay. That is the whole concept of neural networks. So this is what neural networks is, and I would like to go a bit more beyond the PPT. Let's consider one example. I want you to listen to this because you will understand what machine learning is and why you should be interested in it. Okay. So let's say you are multiplying two numbers. Okay, or maybe 45 into 55. What is the first step that you do with your hands? Take the upper number and multiply with the units place. 45 into 5. That's the first step. Then you repeat that step again. And the last step is addition. Now this is just a basic problem, right? You can do it with your hand, you can even code it in your PC. But as they said, there are some problems in real world, such as classification or regression. When it comes to regression, I want to give one example. Let's say I want to find out the house price in Mumbai and Pune. Okay, let's say those are the things. And the only metric that I have, the only thing that I will say is how rich the people are. So I can say that in Mumbai there are more rich people, so maybe the houses are like house price is 1 crore. Okay, but Pune there are less rich people, maybe, so it is 50 lakh. Okay, please don't laugh. That's not a punchline. I'm serious. So it's easy, right? Because there are rich people, so you concluded it. But let's say I gave you 10 such features. They are rich, their way of living, and all those things. So when it was just rich, you can say, okay, he is rich, so he can afford. But when I give you 10 different things to consider on, things get messy, right? It's not that easy. So why do you want to code all that? Like why will you every time input a loop that if this is this and this, if this is this, then this. So you understanding it with me? It's getting complicated, right? So that's the reason we want the machine to learn those steps. This is all the general what machine learning is and why we want machine learning. So thank you. And the next part will be explained by blockchain by Saval. Alright, so this is the last domain we have to offer, blockchain and cryptocurrency. सुना है बिटकॉइन सब लोग ने? है क्या किसी के पास? Point 1 भी है किसी के पास? किसी का नहीं क्या इन्वेस्टमेंट? तो blockchain and cryptocurrency 5 मिनट में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, so I might use some technical terms. Please bear with me. In a very simple language, blockchain एक decentralized peer-to-peer network है और उसमें थोड़ी बहुत चीजें होती है. क्या होती है? Let's talk. But what I mean by decentralized and peer-to-peer. Let's say मुझे एक blockchain network बनाना है VJTI का. Decentralized and peer-to-peer means मैं all over VJTI, let's say 50 computers का एक network बनाऊंगा, उनको connect करूंगा and उसमें कुछ एक process करूंगा. What is that process? Blockchain literally means a chain of blocks. मतलब left में जो तुम्हें दिख रहा है time stamp etc log, वो एक chain of blocks है. What it does is उस ब्लॉक उस चेन में तुम ब्लॉक्स बस अपेंड कर सकते हो. अपेंड मतलब उसके एंड में इंसर्ट कर सकते हो. एंड व्हेन यू इंसर्ट इट, तुम्हें उसके टाइम स्टैम्प के साथ इंसर्ट करना है. दैट मींस अगर मैंने अभी कोई एक ट्रांजैक्शन किया तो सभी के सभी 50 कंप्यूटर्स जो VJTI में है उसके जो भी चेन है उसके पास उसके लास्ट में एक ब्लॉक ऐड होगा सेम कि अभी का जो टाइम है 6:20 का, उसमें सर्वज्ञ ने पुरोहित ने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, वो उस चेन के लास्ट में अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. एंड अपेंड ओनली से आई मीन कि आई कैन जस्ट ऐड अ ब्लॉक टू दैट चेन. पहले के रिकॉर्ड्स में उसमें डिलीट नहीं कर सकता, ना ही अपडेट कर सकता हूं. दिस इज जस्ट एन ऐड ओनली रजिस्टर काइंड ऑफ अ थिंग. कोई बंदा आया रजिस्टर पे अपना नाम लिखेगा, आगे वाला नाम लिखेगा, कोई उस पे कैंसिल या अपडेट नहीं कर सकेगा. Next thing is 50 कंप्यूटर क्यों चाहिए मुझे? That is the next thing, transparency, auditable database. जो भी 50 कंप्यूटर्स हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल होने चाहिए. सब लोगों को वो चेन दिखनी चाहिए ब्लॉक्स की जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं.
and you would be asking, अरे ये तो इसका ट्रांजैक्शन दिख गया कि सर्वज्ञ ने किसी लड़की को दे दिया अपना एक कोई कुछ गिफ्ट दे दिया. So why? Okay, coming to the point. तो ये सिक्योर कैसे करूंगा मैं? That is done via cryptography. Cryptography किसी को आइडिया है क्या रहता है? सुना है? Anyone? कोई चैट बॉक्स में भी लिख सकता है क्या? Cryptography. टाइपिंग आ रहा है क्या उधर? नहीं आ रहा क्या? Okay, so cryptography is तुम्हें अगर मेरा नाम दिया है, मैं उस पर कुछ ना कुछ एक ऑपरेशन चलाऊंगा, एंड उसके बाद मेरा नाम बहुत सर्वज्ञ है तो नमन हो जाएगा. Let's say cryptography is मैं मेरा नाम एनकोड करके कुछ कर दूं using some kind of a key. वो की सिर्फ मेरे पास रहेगा या फिर उस डेटाबेस के पास रहेगा. एंड इसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यूज होती है. फर्स्ट इज अ हैश फंक्शन. व्हाट डज अ हैश फंक्शन डू? थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट एसेंशियली वो मेरा जो भी ट्रांजैक्शन का डिटेल्स है उसको मतलब एनकोड करके टेम्पर रेजिस्टेंट बना देगा. दैट मींस सिर्फ मेरे पास जिसने की है, जिसने सर्वज्ञ का नमन किया है, वो की ही उसको एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है. सेकंड इज डिजिटल सिग्नेचर्स. सबने किया पीडीएफ में डिजिटल सिग्नेचर्स, पता है राइट? सो उसमें तुम्हारा एक आईडी रहता है, एक यूनिक आईडी. वो डिजिटल सिग्नेचर कंसेंट के लिए रहता है कि पीडीएफ में व्हेन यू साइन डिजिटली तब तुम कंसेंट देते हो कि हाँ भाई ये पीडीएफ मैंने किया, इसमें जो जो भी लिखा है आई सर्टिफाइड, आई अप्रूव इट. एंड थर्ड थिंग इज कंसेंसस चाहिए. 50 जो भी कंप्यूटर्स है, लेट्स से मुझे और एक कंप्यूटर ऐड करना है उन 50 कंप्यूटर्स में. मैं VJTI का डायरेक्टर हूं. लेट्स से मेरे कहने पे वो 50 कंप्यूटर्स पे एक कंप्यूटर ऐड नहीं होने वाला. मेरा कुछ ऑर्डर उस पे नहीं चलेगा. कंसेंसस मींस वो 50 कंप्यूटर्स में से 50% प्लस 1, दैट इज 26 कंप्यूटर्स. उन 26 कंप्यूटर्स को एट द वेरी लीस्ट अप्रूव करना चाहिए कि ये एक कंप्यूटर और ऐड होना चाहिए. दिस इज अ वैलिड कंप्यूटर, इसमें सब सिस्टम सही से चल रहा है. एंड जो भी प्रोसेसेस इस पे होते हैं इस ब्लॉकचेन पे, there is something called as a smart contract, which is neither smart nor a contract, just एक नाम है. ये सब चीजें भी उस नेटवर्क में जो होती है इस पे कंसेंसस लगता है. और मतलब 26 कंप्यूटर्स शुड at least at the very least 26 कंप्यूटर्स शुड अप्रूव कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, होने दो इसको. एंड कंसेंसस की बात क्यों आती है? सो लेट मी कम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. उसका बहुत ही हाइप है आजकल ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन का एंड क्रिप्टो करेंसी का. तो बहुत लिमिट टर्म्स में बताओ तो फाइनेंस इज लाइक एक सैंड क्लॉक जैसा है. पैसा जो है एक एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहता है, बहुत सारा पैसा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट वो जो पाइपलाइन रहता है जिधर से पैसा जाता है वो बहुत छोटा है. एंड ईच एंड एवरी बैंक ट्राइज टू कैप्चर दैट पाइपलाइन. अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं और तुमने एक रिंग बना दी है इन दैट छोटा सा पाइपलाइन, छोटा सा फनल, उसमें से तुम 1% भी ले लो तो तुम बहुत रिच हो जाते हो. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बैंक्स एंड अदर कंपनीज ट्राई टू डू. तो ब्लॉकचेन उस बीच वाले लेयर में लगा के ट्राई कर रहे हैं कि क्या होगा. एंड व्हाई डज दिस थिंग वर्क? दैट इज बिकॉज़ मुझे ट्रस्ट है. मैं SBI हूं, ये BOI है, बैंक्स. मैं अगर इससे SBI से BOI कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, आई हैव ट्रस्ट कि BOI के साथ मेरा जो ट्रांजैक्शन होगा उससे मेरा कुछ काम सही से होगा. वो सेकंड थिंग है कंसेंसस. एंड थर्ड थिंग इज जो एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं फाइनेंस के. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि सिर्फ मतलब इस पार्ट में ये लॉग वाला पार्ट एंड डेटाबेस वाला पार्ट वाज ओनली टू डू विद टेक्नोलॉजी. टेक्निकल पार्ट पे था क्या कैसे होना चाहता है, बट मेरे को जब ये रियल लाइफ में डिप्लॉय करना है, रियल लाइफ में मैं ये इंप्लीमेंट करना है, मुझे फाइनेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना है या कोई भी और प्रॉब्लम सॉल्व करना है सिक्योरली, कंसेंसस नाम का एक लेयर आता है इस पर. कंसेंसस प्रोटोकॉल. गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशंस होंगे या BOI और SBI के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, वो सब इसमें एक नमक मिर्च की तरह छिड़के जाएंगे और एक लास्ट में तड़का बनेगा, which is a blockchain network. And this also addresses something called as a cost of trust, because again मैंने जैसे बोला था ये ट्रस्ट है मेरे को इस पे, that is when the transaction happens. So वो ट्रस्ट को भी क्वांटिफाई करने की कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट नाम की चीज रहती है. एंड देयर इज अ वेरी फेमस, मतलब अगर तुम लोग ब्लॉकचेन चालू करो थियोरेटिकली, एक वेरी फेमस प्रॉब्लम है कॉल्ड द बिजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम. काफी फेमस प्रॉब्लम है एंड दैट एड्रेसेस दिस कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट. सो आई होप ये समझा होगा, बट
this is how it is. And consensus में again permission and permissionless रहता है, बहुत कुछ रहता है. But आज कभी घर पे जाके देखना कि बिटकॉइन का कोई भी डेटाबेस तुमसे एक्सेसिबल है कि नहीं. Obviously तुम लोग उसको ये नहीं कर पाओगे decode because you do not have the keys. But another thing is, since that is a permissionless मतलब public network है, तुम लोग तुम्हारे घर पे अगर तुम लोग को हार्डवेयर का तुम्हारे पास पैसा है, you can start something called as mining, crypto mining. सुना होगा सब लोगों ने, right? So you can be a part of that network, provided तुम उस consensus के agreement का part हो. That is how blockchain works. Technically बहुत कुछ है इसमें, but real life भी बहुत कुछ जानने मिलता है, बहुत interesting है. Alright, so that concludes all the domains का introduction. I hope ज़्यादा boring नहीं था, and we are now open to doubts. Any doubts? Even chat box में ना, या chat box में अगर doubts रहेंगे तो it would be better. मतलब online वाले and offline वाले direct तुम लोग हाथ उठा के पूछ लो. Any doubts? कुछ भी related to inheritance, related to any domain, कोई भी doubts हो. And we also have here present Ravi Maurya, हमारे senior TY. So previous year के जो core member थे, he was the development head. So a huge welcome to Ravi here as well. And ये आपका भी first offline event है, right? COC का? Yes. Did you organize one? No. Unfortunately. So अभी COC के बहुत events offline होंगे, enjoy करो. And seniors के साथ interaction better रहता है. मेरा and रवि भैया का ज़्यादा interaction नहीं था until I came to SY. This is your opportunity to interact better with your seniors, get your doubts cleared. पूरा 3 महीने में जितना परेशान करना है seniors को करो, बिंदास. Any doubts now? Any doubts? Chat box में भी कुछ है तो बताओ. आजा. Alright, so और एक experience share करना था हमारे core team members है वैभव पटेल. He missed inheritance last year का. बहुत competitive program है, 4 star है. Course पे code process में भी काफी अच्छा rating है. He'll tell you कि what difficulties he had faced in spite of doing so much of CP and DSA in his interviews, just because he lacked development. So hello all of you. I hope कोई exhaust नहीं हो गया इतने बड़े workshop के बाद. So first of all, ये inheritance का मतलब क्या है? Inheritance is like we are inheriting some. Hello. So basically inheritance means we are inheriting some knowledge from our seniors. So यहाँ पे जितने भी developers हैं, उन सबके पास कुछ ना कुछ knowledge है. So whenever you will be like mentee to them, they will surely help you. They will give you some resources. कि यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे knowledge है. अगर Google पे सर्च करोगे कि यार मुझे HTML सीखना है, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे. बट जो इनको पता होगा, इन्होंने सारा एक्सप्लोर करके रखा है ना, तो दे नो कि इनमें से कौन सा रिसोर्स अच्छा है जिससे तुम लोग ज्यादा सीख पाओगे. एंड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. When you speak something about backend, there is Python Django, Python Flask. There is Node, Express. So बहुत सारे options हैं. But when you learn something, you are going to use it in all the languages. I share my personal experience. I have learned both Node, Express and Django. So basically, there is no difference, MVC and MVT. But the only thing you need is you want to develop something. If you don't have intensity and you don't want to work on something, you will not be able to create some app or any website. Basically, if you have watched some web pages online, you can check Netflix web page and MahaDBT government web page. If you will inspect that code, you will understand what is the difference between skills of those two persons who have developed them. If you inspect everything, then there will be difference in code. So what do you want to be? Do you want to develop government website or do you want to develop Netflix? There will be a huge difference in salary also. Because of that. Yeah. So you work on anything, you learn it from seniors, and you also yourself make notes. Don't drop the habit of making notes. Whenever, suppose
अभी कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, हर एक वेबसाइट में लॉगिन साइन अप तो होता ही है। तो जब भी आपने कोई भी एक वेबसाइट पे लॉगिन साइन अप बनाया तो उसको स्टोर करके अपने पीसी पे कहीं पे रख दो। तो जब हैकाथॉन दे रहे होंगे तो वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे। कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ड्राई इज द बिगेस्ट रूल इन अवर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इफ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। ड्राई मींस डोंट रिपीट योरसेल्फ। जो भी आज लिख रहे हो वो 10 साल बाद भी तुम्हारे पास होना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज लिखा है और वहां से मैं कॉपी पेस्ट करके अपना टाइम बचा सकता हूँ। इट इज रियली इंपॉर्टेंट हैबिट, इसको ड्रॉप मत करना। और मैंने इनहेरिटेंस नहीं दिया था, मुझे ये सब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं मिला था। आई डेवलप्ड द प्रोजेक्ट्स इन वैकेशन, so because of that I was not able to work on DSA. I eventually got internship at Goldman Sachs because of my CPA rating and all things. But the thing is, you have 2 months and you are whatever you are going to learn, you will keep it with you. And whenever you are giving hackathons, it will be only 1 or 2 days. I just gave an hackathon which was for 1 day, and I developed the whole website. So it was terrific if you don't have snippets available. If you have snippets available, it will be easier for you. So you whenever you are doing anything, developing something, always keep track of this, what you are doing. And always ask something to your seniors. There are people who would have better code than you. So ask them, verify whether it is a good code or not, and they will surely help you. And we are here for you. We are seniors to you, and in our COC club is by the juniors, and you guys have to work in inheritance. In future also you are also going to come here and conduct this workshop for your juniors. So basically just keep on working and keep on learning. Don't drop your intensity. You will get some times where you will feel, why do I have to develop so much? So don't drop these things and always keep on learning. Don't stop that thing. Okay, thank you so much. ऑलराइट, कोई डाउट्स है? चैट बॉक्स में कुछ है? हाँ बोलो। अच्छा हाँ, मैं मीट यहाँ से चालू कर सकता हूँ ना। इनहेरिटेंस में ये नहीं सिखाते क्या? ऑनलाइन लेक्चर सिखाते हैं। ऑनलाइन लेक्चर। ऑलराइट, ओके। How machine learning is proceeded? Devansh. Okay. How machine learning? Okay. What he means is HTML, CSS से तुम web dev चालू कर सकते हो, तो machine learning के लिए क्या? Okay, so like you're asking for like where do I start machine learning? Okay, so like generally the most popular language or the most popular frameworks also used are in Python. That is the de facto community language. There are also other options like Julia, and there are some people who are trying to do like machine learning in JavaScript. But yeah, the most used and the most popular, the most well-documented language is Python. The most well-documented libraries in machine learning are also for Python, like TensorFlow, Pandas, NumPy, you name it. So yeah. Yeah, okay, so of course you can learn about all these frameworks when we'll be conducting the ML Basics workshop in mid-October, yeah. And does web development have scope? VP, does web development have scope? बताओ All right, so the question here is does web development has scope? Well, yes, more than you would imagine. It does have it, because like suppose in web development, what are you learning? Okay, we mentioned HTML, CSS, JavaScript. Like you're learning JavaScript. Now JavaScript, if you learn it, or the vanilla JS standard, you are going to learn that will be used in React, right? And I think you also saw React in app development, right? So you are with JavaScript almost you're learning everything, right? So yes, web development has a lot of scope, because eventually
speaking in general terms, you are going to need websites, and there needs to be someone to maintain it. And yes, there are always some talks that machine learning will overtake the standard designs and everything like that. But if you need the customized designs, only then that will be only done by a web developer. So yes, web development does have a scope. Thank you. Alright, any doubts from here? Bindas bolo. Bindas. No doubts? फिर देखो रात जाके डीएम्स आ गए तो देखना तुम लोग और क्या चैट बॉक्स पे क्या हुआ पूछो कुछ टाइमलाइन अच्छा वापस दिखाता हूँ यार फोटो ले पीपीटी यार हम लोग पीपीटी भी शेयर करेंगे ऑब्वियसली हाँ इसमें क्या डाउट था स्क्रीनशॉट हम लोग पीपीटी शेयर करने वाले हैं अभी भी तुम लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट नहीं अभी ऑफलाइन इवेंट है ऑफलाइन इवेंट सो तुम लोग के जो भी एमएसटीज एंड ईएससीज है प्लस हमारे एमएसटीज एंड ईएससीज ये सबको ध्यान में रखते हुए ये अप्रॉक्स टाइमलाइन है कट टू कट नहीं होने वाला आगे पीछे भी हो सकता है बट तुम लोग कन्वीनियंटली कर पाओगे वैसा है ये हम लोग तो लास्ट ईयर हमारा चालू हुआ सितंबर एंड में राइट सितंबर एंड में हमारा थर्ड सेमेस्टर चालू हुआ था वी डिड नॉट गेट एनी हॉलीडेज एंड दिसंबर एंड तक शायद था इनहेरिटेंस इनफैक्ट 15 दिन एक्सटेंड कर पाया था सो हम लोग का तो काफी ज्यादा क्रैम्प्ड अप था पूरा इनहेरिटेंस का प्रोसेस तुम लोग तो बहुत कन्वीनियंटली कर सकोगे इतने टाइम में प्लस ऑफलाइन सपोर्ट है विंटर अंदर आके मीट मतलब इंटरनेट जाएगा 2 घंटे तक हम लोग रुकोगे एंड मिसकम्युनिकेशन होगा सीधा मेंटर को बोला कि भाई तू इस दिन आ रहा है लैपटॉप लेके मैं आएगा मेरा डाउट क्लियर करके निकल दैट इज इट ऑफलाइन का बहुत बड़ा एडवांटेज है व्हिच वी हैड मिस्ड प्लस तुम लोग का सीनियर्स के साथ रैपो बहुत अच्छा होगा टाइमलाइन का और कुछ है डाउट Any other doubt? any other doubts about any domain or anything good for a group of 4 depends on your domains at least 2 से 3 mentors तो मिलेंगे ही तुम्हें but depends on your domains like अगर वेब डेव का प्रोजेक्ट है तो 2 mentors 2 या 3 mentors भी कर सकते हैं हैंडल but वेब प्लस एमएल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स है तो 2 वेब के 2 एमएल के या तो 3 वेब के 1 एमएल के वैसा भी चल सकता है so it depends on your project but या एक ही नहीं होने वाला बहुत होने वाला है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम्हारा मेंटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सीधा मुझे या किसी भी कोर टीम मेंबर को अप्रोच करो कंप्लेन करो उसकी हम लोग देखेंगे क्या करना है उसका चैट में Can we have a team of 3 members? I'm sorry, but exact 4 members चाहिए. कहीं से भी लेके आओ एक कोई member. Very honestly, 4 में से सिर्फ 2 लोग काम करते हैं. Last year हम लोग ने देखा है. तो तुम लोग चौथा लेके भी आओगे तो कुछ उखाड़ने नहीं वाला. अरे बहुत honestly बताता हूँ. And any prerequisites for inheritance, none whatsoever. मैं खुद web development के project में था, web plus ML में. HTML CSS मैंने चालू किया था मेरे first week में. No prerequisites, none whatsoever. Not just web development, कोई भी domain के लिए. And अच्छा ये scope वाला तो हो गया. और कोई doubts है? Any doubts? Anything about COC? Anything about COC? Anything about members? अगर कोई group वगैरह में नहीं है तो बोल दे, add कर देते हैं. And doubts अगर पक्का नहीं है चैट बॉक्स में अगर आते हो तो कॉल इंटरप्ट करा we'll talk a bit about CP as well चांस मिला ही है ऑफलाइन इंटरैक्ट करना तो CP टीम के साथ भी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं this is अभिषेक गुप्ता CP head this is brother obviously अपना CP का टीम मेंबर and this is Bhavik again our CP team member बहुत सारे लोग सीवी में इंटरेस्टेड होंगे बट मेरा ये रहेगा कि इनहेरिटेंस में पार्ट लो अब हम लोग इनहेरिटेंस के बाद एक सीपी का प्रॉपर वर्कशॉप कराएंगे बट लाइक नेक्स्ट मंथ में अच्छे से मतलब करो लेकिन
मतलब कॉन्टेस्ट देते रहो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी रहता है रेगुलरली CFN CC मतलब कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देते रहो एंड लाइक 3 मंथ्स के बाद जब आपका हो जाएगा हेरिटेज देन हम लोग इन द समर वेकेशन हम लोग वर्कशॉप्स करेंगे। तब तक के लिए लाइक सीपी के लिए हम कुछ नहीं वर्कशॉप भी कर रहे हैं लेकिन आप कॉन्टेस्ट देते हैं। हाँ लाइक किसी को लिटरली कोई भी डाउट होता है सीपी का व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। डीएम भी कर सकते हैं लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे ये रहेगा कि लाइक हमारे डाउट से किसी और का भी डाउट क्लियर हो जाएगा लाइक वो बेटर रहेगा। हाँ और जल्दी भी क्लियर होगा क्योंकि मैं अगर आप मुझे पूछोगे मैं ऑनलाइन नहीं रहा तो कोई और भी आपका ग्रुप में डाउट क्लियर करा सकता है। सो मेरा ये रहेगा कि कोई डाउट है या कॉन्टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो भी भेज सकते हो। आप किसी भी वेबसाइट से क्वेश्चन कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है लाइक अगर रिसोर्सेज चाहिए तो देन सीएसईएस वेबसाइट होती है कोड शेफ है कोड फोर्सेस है एंड सिंपल डीएस से करना है। हां लीड कोड है लेकिन ओके लीड कोड भी है। हां डीएस से ओरिएंटेड है लेकिन कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस आ रही है। हां ओके रिसोर्सेज के लिए भी हम मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं इसके लिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। Our guys from core branch welcome here very much. हमारे core team में भी core branch वाले बंदे हैं, excluding the circuitous branches and बिंदास आ जाओ। and in fact बहुत बार हुआ है कि circuitous branches वाले या core branch वाले जो भी लोग हैं उनका the sole project on their resume जो बहुत अच्छा था development का that came through inheritance. So core branch वालों के लिए literally बहुत अच्छी opportunity है to make a development वाला project added to your resume एंड अच्छे से बनाओ। 3 मंथ्स है उसके लिए मेंटरिंग भी मिलेगी एंड सीओसी अगेन एक कम्युनिटी है ओपन फॉर एवरीवन है क्लब नहीं है जिसको भी आना है आ जाओ बिंदास। एंड व्हाट डोमेन्स विल बी गुड फॉर बिगिनर्स और प्लेसमेंट्स किसको आंसर करना है? ओके सो बहुत ऑनेस्टली बताओ बिगिनर्स के लिए वेब डेवलपमेंट सबसे इजी है। ऐप डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस कंपेयर्ड टू वेब डेवलपमेंट। मशीन लर्निंग में अगर और भी ज्यादा लगता है ऑब्वियसली पेशेंस तो ठीक है बट उसमें टेक्निकल मतलब मैथमेटिकल नॉलेज भी काफी ज्यादा लगता है। मैं खुद मशीन लर्निंग ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूं बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन बट अगर मैं बिगिनर्स के लिए बोलूं तो वेब डेवलपमेंट सबसे इजी है। आफ्टर दैट इज ऐप डेवलपमेंट। पेशेंस लगता है बट ऐप डेवलपमेंट इज इजी। देन मशीन लर्निंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। थोड़ा अलग पैरेलली चलता है वो। That depends more on आपका aptitude कैसा है आपका thinking skills कैसा है। But machine learning भी if you start from now like Arnav है, Devansh etc. है, they started it right from their SY of beginning. They have almost been in there for 1 year I think, 1 year से भी ज़्यादा। They are experts now in the field. And हम लोग ने just अभी चालू किया है, we are facing difficulties. So ML is one such domain जहाँ बहुत dedication लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगता है बट इवेंचुअली तुम लोग को समझता है। एंड ब्लॉकचेन हो गया तो ब्लॉकचेन का इट इज लाइक कनेक्टेड टू अ बिट कनेक्टेड टू वेब डेवलपमेंट। ब्लॉकचेन अगर तुम लोगों को कोई बनाना है प्रोजेक्ट यू नीड सम काइंड ऑफ एन इंटरफेस एंड अ बैकएंड टू वर्क ऑन इट एंड मोस्ट प्रोबेबली वेब3 सुना होगा तुम लोग ने तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट लगता है एंड एक एडिशनल लेयर ऑफ ब्लॉकचेन। और कोई प्रीरेक्विजिट्स फॉर ब्लॉकचेन वुड सजेस्ट ना? एंड जो बेसिक रहता है वो क्रिप्टोग्राफी हैशिंग फंक्शंस एटसेट्रा वो डीएसएस से हो जाता है। सो नॉर्मली हम अभी डोमेन्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बट तुम लोग आइडियाज भी ढूंढो कि क्या आइडियाज कुछ लाइक प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए एट द एंड। सो मैंने लास्ट ईयर इनहेरिटेंस में एक आइडिया देखा था जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। सो द प्रोजेक्ट वाज अ पॉटहोल इन्फॉर्मर। सो एक मोबाइल ऐप बनाया था एक टीम ने जिसमें अगर आप रोड पे जा रहे हो एंड आपको अगर कोई पॉटहोल दिखेगा तो आप उसका फोटो खींच के उस लोकेशन को टैग कर सकते हो कि यहाँ पे एक पॉटहोल है तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म हो जाता है। सो ये काफी यूनिक आइडिया था समवॉट एंड बहुत अच्छे से उन्होंने टीम ने बनाया था। सो ऐसे कुछ आइडिया सोचो जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड दैट एंड फिर वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या डोमेन चाहिए फिर वो तुम देख सकते हो कि whether it requires web development, app development, machine learning or blockchain versus web development. And another part of the question was what domain will be good for placements. ऐसा कुछ नहीं रहता। मुझे खुद को सिर्फ वेब डेव आता है, थोड़े हद तक ऐप डेव आता है। मेरा प्लेसमेंट इंटर्नशिप लग गया है।
Then we have app developer. We have very good app developers like here. Goldman Sachs में भी उन लोग का हो गया है. It just doesn't matter. सबसे पहले तो internship लगा था ML वाले का. It seriously doesn't matter कौन से domain से हो, बस जो domain में हो अच्छे से explore करो. And like Ravi भैया said, there is nothing like कि तुम लोग को एक domain पकड़ा है और तुम उसको explore कर रहे हो. तुम लोग को जो भी ideas आ रहे हैं उससे देखो कि which tool or which domain you can use to implement it in real life. And this will help you a lot in hackathons as well. Because वहाँ तुम्हें problem statement देंगे, वहाँ तुम्हें tech stack या domain नहीं देंगे. Good. Yep. So yeah, again, like while we're on the subject of domains, so I would say कि flexible route, because कई बार जो है, like again, as he said, hackathons में या even real life problems, they don't, भाई ऐसा नहीं होता कि भाई अगर मतलब आदमी को कैंसर है, and then you are like नहीं, but मुझे तो बस blood pressure ना होना, तो नहीं, that doesn't work. But yeah, so be flexible, be open-minded, explore everything that you can right now. I'm not saying specialize mat karo. I'm saying just be open. Like the more open you are to learning new skills, it will always be beneficial. Because again, the most important part in development is problem solving, not what domain or what tech stack you're using. Yeah. So like again, maybe like I have some experience with web dev and machine learning. Because again, machine learning to like you can develop it locally and तेरा model बन जाएगा, but you need to share it with others, right? You need to deploy it, you need to have it on the internet so that everyone can communicate with it. So again, web dev तुमको आना, like you have to learn it, otherwise भाई like cats and dogs का बताया तो भाई कंप्यूटर पे डाल रहे हैं and वो बता रहे cat या dog है, but like अगर किसी और को चाहिए तो भाई फिर उसको मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा, सब सेटअप, not worth it, right? So yeah, just be open. That's what I would say. Anything? Anyone? कर लो, add कर लो. I think that clears the doubt about beginners के लिए क्या है good and placements के लिए क्या good है, हाँ. अच्छा हाँ, and about the resources वाला part, resources तुम लोग का जो भी domains होगा तुम लोग के mentors तो मैं share कर देंगे. मतलब काफी common resources रहते हैं, like web के लिए MDN रहता है, app के लिए उसके documentation रहती है, ML के लिए थोड़े Coursera courses है, वो सब तुम लोग को share किए जाएंगे. So that is not a worry. वो अभी नहीं, eventually जैसा तुम लोग का progress करेगा inheritance तुम लोग को तुरंत दिया जाएगा. And make sure first week का जो Git workshop है please attend करो, because तुम लोग अगर development आता है Git नहीं आता तो it will be really difficult. नहीं है ना? Good. Yeah. ऊपर. So, does anyone know about or have heard about quantum computing? Anyone? Quantum computing. Okay, so it's a upcoming field, and if anyone is interested, I'm open to talk with them. I'm Amay, comms branch. Quantum computing. Okay, it's fine. You can go home and search it. But if you want to talk or just have a discussion, just have a small chat, I'm always open. That's all. Thank you. And just to inform, Amay is a G-Software in quantum computing. Some projects are there. A lot of research oriented. So it's not just about development. अगर तुम लोग को explore research work भी करना है, machine learning, quantum computing, etc. We have seniors who are ready to help you. And quantum computing के बारे में तुम लोग को थोड़ा ML का prereqs पता होना चाहिए. You cannot directly jump on it, if I'm right. So that's why as a domain listed नहीं था, because वो बहुत ज़्यादा complex हो जाता है. Step wise जाओगे, your seniors will be ready to help you. Any other questions anyone has? Amay, could you drop in your full, yeah, sure. मेरा पूरा नाम है, LinkedIn profile डाल दो, chat box में phone number डाल दो, पूरा नाम डाल दो, गलत स्पेलिंग, never mind. नहीं बात तो sorry, hard to. Alright, ये उसका नाम और LinkedIn प्रोफाइल बाद में शेयर करते हैं. DM any of our seniors उनका LinkedIn तुम स्टॉक कर सकते हो. मैंने भी स्टॉक नहीं किया. फॉलो भी कर देंगे.
एंड यार गिटहब पे अकाउंट्स बना लो यार, गिटहब पे अकाउंट्स बना लो, एक दूसरे को फॉलो करने लगो। सो rather than using any social media etc website, GitHub पे भी थोड़ा एक्टिव हो जाओ। बहुत कुछ सीखने मिलेगा GitHub पे। एंड तुम लोग के प्रोजेक्ट्स डाला करो GitHub पे, सो दैट रेज्यूमे पे भी अगर कुछ है एंड यू वांट टू प्रेजेंट इट, सो लेट्स से तुम लोग ने एक प्रोजेक्ट बनाया कैलकुलेटर, वो तुम्हारे पीसी पे स्टोर्ड है। अगर तुम किसी इंटरव्यू में जाओ एंड तुम्हारे रेज्यूमे पे लिखो कि भाई मैंने कैलकुलेटर बनाया, ये उसके सब फीचर्स है, he would ask you कि अच्छा इसका कोड दिखाओ मुझे, then would you just give him a pen drive या तुम्हारा लैपटॉप? No, right? You need to store it somewhere. Google Drive जैसी चीज रहती है, Google Drive का लिंक डाल सकते हो। तो सिमिलरली एक स्पेशलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम रहता है Git नाम का, एंड Git को Git रिपोजिटरीज जो रहते हैं, Git के फोल्डर्स, वो अगर तुम लोग को इंटरनेट से शेयर करना है तो GitHub नाम का एक प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, बट GitHub नाम का एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है। Alright, I hope सब doubts यहाँ cleared है and chat box पे भी। So बोला ना जैसे रवि को कंक्लूड कर। नहीं मेरे पास कंक्लूड करने के लिए तो ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को, बस बोलूंगा कि इनहेरिटेंस में जरूर पार्टिसिपेट करो सब लोग एंड सीओसी के साथ कनेक्टेड रहो। आगे बहुत सारे वर्कशॉप्स सब कंडक्ट करवाएंगे इन लोग, वर्कशॉप्स, हैकाथॉन्स, कॉन्टेस्ट, इवेंट्स एंड ऑल, सो डू पार्टिसिपेट। एंड सीओसी का द स्लोगन इज बाय द सीनियर्स फॉर द जूनियर्स, सो यही चल रहा है अभी तुम्हारे लिए, सब लोग करवा रहे हैं, फिर जब तुम आओगे थर्ड ईयर में तो तुम लोग फिर तुम्हारे जूनियर्स के लिए सब कंडक्ट करवाओगे, सो that is great to have at VJTI. मीट का फोटो लेना है, कैम ऑन करके उनको बोल देता हूँ। अरे पूछ लेते हैं।